I'll make my presentation today a bit more interactive, and this will give me an opportunity to learn from majority of students हैं यहाँ पे majority में, तो आपसे थोड़ी सी learning भी हो जाएगी मुझे, because you are going to be future experts in the industry. So what we are going to talk about is GIS, and I think yes, it's working now, and I've got this. So I just want to know what GIS. अभी काफ़ी सारी डिस्कशन हो गई, तो मुझे कोई बताएगा कि GIS का क्या मतलब है? What GIS is? Someone was telling me this morning that there were 3 technologies which came 2004 में. It was US Institute of Labor, I think, Nano, Bio and Geo. And since 2004, geotechnology through GIS, GPS, web mapping, remote sensing, such technologies, ये बहुत, now we are talking about, I think it's 70 to 80 billion की industry, US dollars. It's a big, अभी जो पाकिस्तान में इतना लोगों को शायद इतना नहीं पता. So that, let's go for the next one कि पाकिस्तान में लोगों को कितना पता है इसमें. मैं पहले सुन रहा था, इससे पहले अफरा सयाब साहब ने and then कामरान talked about the application of GIS in different industries. आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, that starts from where? And that is where GIS comes in, spatial data. Okay, the application of GIS in real estate. Real estate is everything. A tangible asset. और पूरे की पूरी ज़मीन पूरा अर्ज़ जो है वो it is real estate. And let me just talk about it. This is the figures of Savills, which is the biggest survey of UK in 2017. And they mentioned something about real estate here. पूरी ज़मीन जो planet Earth है, इसकी value है 324 trillions. And out of that, 85 to 90% is real estate. 286 trillion, which includes residential, commercial, and agriculture, forest, everything. That is all real estate. So 85 to 90% of the world's wealth is real estate. आज तक सोना जो निकला है या लोगों के पास है, सोने की बड़ी वैल्यू होती है. जितना भी माइन हुआ है आज तक, जितने भी सोने के रिजर्व्स हैं, वो 7 trillion US dollar. Whereas real estate, we are talking about 286 trillions. Now, if I talk about Pakistan, तो पाकिस्तान की भी 85 to 90% worth जो है, net worth, that is in real estate. Do we know it though? हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे हमने real estate को क्या बनाया हुआ है? If you walk into, I spend most of my time in United Kingdom. If you walk into any of the London streets or United Kingdom में, and if you look into markets, sharpest looking individuals, जो gentlemen, ख़वातीन और बात जो बात वहाँ पे walk कर रहे होंगे, they would be, जिनकी dressing सबसे अच्छी होगी, they'll be the investment banker or real estate professional. Real estate is a science and art. Today, पूरी दुनिया जो है real estate का potential realize कर रही है. और जितने भी मुल्क आज तक बड़े बने हैं, तरक्की याफ्ता बने हैं, develop हुए हैं, वो real estate के through develop हुए. Be it UK, because British Empire था US से पहले, तो आप आज भी जाके buildings देखें, real estate का जिस तरीके से उन्होंने use किया हुआ है. Be it US, अभी जो recent history में China, India और छोटे छोटे जितने मुल्क हैं, सिंगापुर, दुबई, सब, they use their real estate for everything. China used their real estate for their industrial growth. आज मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था कि 60% of the population living in the urban areas of China, उसके पास जो घर है वो 10 साल से पुराना है, इन पिछले 10 साल में बना है, was built in last 10 years. So करोड़ों घर बने होंगे चाइना में, और वो जो करोड़ों घर बने हैं, उनके बनने के दौरान उन्होंने जो चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होनी थी, करोड़ों लाखों बिल्डिंग्स बनी हैं वहाँ पे,
उन्होंने वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज लगाई और जो उन बिल्डिंग्स के अंदर चीज़ें लगती थी उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। उसके बाद वहाँ पे अपनी जो पॉपुलेशन थी उनको, यंग पॉपुलेशन, उनको ट्रेनिंग दी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाइनीज लेबर, एंड देन दे बिकेम द एक्सपोर्ट हब ऑफ द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान? हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम जो अपना ट्रू पोटेंशियल है पाकिस्तान का रियल एस्टेट का, उसको रियलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज इफ वी रियलाइज दैट we become one of the fastest developing country in the world। आज बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया, so we can become the fastest growing country in the world अगर हम अपने रियल एस्टेट के सही पोटेंशियल को इस्तेमाल करें। Why? Because world over ग्लोबल जो इंक्रीज है, ग्रोथ है रियल एस्टेट की, that is 5 to 7%, whereas in Pakistan if you make your investment right you are going to get more than 20% growth अगर सही जगह पे आप इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट के अंदर। बट सही जगह का तयन कैसे होगा? हाउ आर वी गोइंग टू डिटरमिन कि आवर इन्वेस्टमेंट इज राइट? रियल एस्टेट के अंदर हम सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज वेयर, एंड टू नो वेयर यू नीड ऑब्वियसली GIS। यहाँ पे रियल एस्टेट में देखें बिलियंस के प्रोजेक्ट्स हैं और लोग उनमें बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है? सो वी हैव प्रॉब्लम। एक तो प्रॉब्लम ये है पूरा पाकिस्तान जो है उसका जो 7 मेजर सिटीज स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद एंड कराची, दीज आर द 7 मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान जो कि प्लान्ड हैं, जिनमें कुछ न कुछ एरियाज प्लान्ड हैं। एंड देन वी हैव अनदर 17 स्मॉलर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। इन टोटल दैट इज द टोटल अर्बन प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान। अगर जो 7 प्लान्ड एरियाज हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है, अगर उनकी प्लान्ड एरिया की वर्थ को डिटरमिन किया जाए टुडे, दैट इज बाय द वे 0.17% ऑफ द टोटल पाकिस्तान एरिया। So that 0.17% is worth जो इस वक्त हो चुका है और जो हो सकता है, जो नेटवर्क उससे ली जा सकती है, that is 3 to 4 trillion US dollar। Now this is the potential this country has। However, the problems, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि GIS तो बाद में आएगी, उससे पहले प्लानिंग आएगी, और अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिंग है दैट इज लेस देन 1%। सो लेस देन 1% ऑफ होल ऑफ पाकिस्तान इज प्लान्ड टुडे। एंड द अदर प्रॉब्लम व्हिच इज बिगर देन दैट, वी डोंट हैव एनी डेटा फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कहाँ पे प्लॉट लेना है, कहाँ पे घर बनाना है, कहाँ पे मॉल्स बनाने हैं, कहाँ पे होटल्स बनने चाहिए, where the answer to where does not exist, and that is why the biggest criticism of real estate investment is that it is not very productive in Pakistan. Why? Because 70% of the decision making is wrong. 70% of the investments are going into the non-productive areas। काफी दफा सुना होगा, काफी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और आज 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, आपके पैसे फंस गए। This happens, and this happens a lot, and the problem is we don't have a data to support our decision making process, and what we do is कि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी किसी ऐसी जगह पे डाल देते हैं जहां पे वो it becomes non-productive। So what Graana is doing, Graana is going to bring that change कि आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। आगे क्या हो? वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन एंड काफी सारी और चीजें, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज ऑलरेडी देयर। आज भी गूगल जो है वो ये करता है कि जी आपने फॉर एग्जांपल जियो टैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि जी लेट से आपने डाल दिया कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है,
और उस रेस्टोरेंट में जितने भी एंड्रॉयड जा रहे हैं उससे वो उनके पैटर्न डिटर्मिन कर रहे हैं कि अच्छा जी इस टाइम पे रेस्टोरेंट ज़्यादा बिजी होता है, इस टाइम पे कम होता है, क्योंकि वो मशीन लर्निंग हो रही। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर? AI एंड ब्लॉकचेन के आने के बाद क्या होगा, स्पेशली AI के आने के बाद क्या होगा? आई हैव अ पैशन फॉर आर्किटेक्चर बाय द वे। यहाँ पे आर्किटेक्ट्स पता नहीं है या नहीं। सो आर्किटेक्चर में मैं सोचता हूँ कि मैं जब AI होगी तो मैं AI को एक प्लॉट दे दूंगा कि ये प्लॉट है, प्लॉट ऑफ लैंड, और मैं बता दूंगा कि मुझे ये आर्किटेक्चर चाहिए, ये इंटीरियर चाहिए, ये एक्सटीरियर चाहिए, और इतनी स्पेस होनी चाहिए, एंड आप वही एंटर कीजिए कितना बन सकता है, जिसको हम FAR और बाकी चीज़ें कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। आई जस्ट प्रेस द बटन एंड इट विल टेल मी ओके फाइन, इट विल शो मी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन बिल्डिंग्स, जिसके लिए आज महीनों सालों लग जाते हैं प्लानिंग में। AI is going to change the world, and AI is going to be based on one thing. AI के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, that is data. America and US are spending billions of dollars AI के लिए, blockchain के लिए। हम कहाँ पे? I quote one example for real estate professionals by the way, कि जब ब्रिटिशर्स आए थे सब कॉन्टिनेंट में, एंड हाउ दे टुक ओवर, दे हैड बुलेट्स, और हम सोर्स के साथ उस वक्त भी लड़ते। दे हैड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी इज कमिंग एंड इट्स कमिंग फास्ट एंड इट्स टेकिंग ओवर एवरीथिंग एंड इट्स गोइंग टू चेंज पीपल्स लाइफ, एंड आर वी रेडी? आज भी हम बात कर रहे हैं जी, देयर आर टेक्नोलॉजीज व्हिच आर नाउ यूजिंग GIS, और उससे बहुत ज्यादा आगे चलेगी। So unfortunately we are not, and that is what Graana is aiming for. Graana is aiming for कि हम सबसे पहले digitization, which is basic mapping, we are going to be digitizing whole of Pakistan, and the team is going to complete the 7 major cities of Pakistan by December 2019, which is 2 months time. Okay. 31st of December 2019, you're going to complete. Other areas, the cities of Pakistan are going to be done next year. So that is going to be by December 2020. And then you are going to do the rest of the areas, उसका आप plan करेंगे। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। That was a mammoth task. I think आज इनके साथ जो town planners ही काम करें, 91 town planners out of 600 practicing town planners are working. It's probably the biggest pool of town planners working in this group. And my best wishes to you, inshallah, because that is the start. कल मैं पढ़ रहा था कि future में by 2050 50% of the world transactions, all transactions, are going to be on blockchain. Now, the concept of blockchain, उसका जो starting point है, that is to do with GIS के आपकी जियो टैगिंग। आज किसी को पता है कि ये जो पोर्टल्स हैं, डिफरेंट पोर्टल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, प्रॉपर्टी पोर्टल्स, उनके ऊपर कितनी लिस्टिंग्स हैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टोरल जोन की? किसी को पता है? आई थिंक अगर आप जाके लिस्टिंग्स देखें तो हाफ ऑफ इस्लामाबाद में टोटल प्लॉट्स हैं इस वक्त 54,000। थैंक्स टू तैमूर साहब टीम, मैं आई डोंट नो कि कितने घर हैं, कितने पोर्शंस हैं, कितने प्लॉट्स हैं, कितने उसमें से रेंटेड हैं, कितने बिकने जा रहे हैं, क्या मार्केट के ट्रेंड्स हैं। तो ऑल दिस डेटा दे मैनेज टुगेदर इन लास्ट 2 years। तो आज अगर आप पोर्टल्स पे देखें तो आप देखेंगे कि आउट ऑफ 54,000 समवेयर अराउंड 15 to 20,000 जो है वो लिस्टिंग्स होंगी। इट मींस कि नियरली हाफ ऑफ इस्लामाबाद इज ऑन सेल, व्हिच इज नॉट द केस। देयर आर लॉट ऑफ डुप्लीकेट वो लिस्टिंग्स हैं। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच हैज द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि आप जब डिजिटाइज कर लें तो यू हैव टू थ्रू जियो टैगिंग करें कि हर लिस्टिंग, हर प्रॉपर्टी जो जहाँ पे है उसका टैग हो, और वो जब भी दोबारा आए तो उसी टैग के थ्रू या उसी रेफरेंस के थ्रू आए। एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, और जो आपके ब्लॉकचेन के अंदर जो जितना भी रिकॉर्ड सेविंग हो। सो द फ्यूचर इज जो ग्राना करना चाहता है, एंड आई मस्ट टेल यू कि हम अकेले नहीं कर सकते, वी नीड योर सपोर्ट।
ग्राना ये करना चाहता है कि पहले सबसे पहले विद रिगार्ड्स टू दिस स्पेशल डेटा दिस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है पूरे पाकिस्तान को एज ए स्टेट के हम डिजिटाइज करना चाहते हैं. उसके बाद व्हाट इफ यू नो एंड दिस इज व्हाट एआई इज गोइंग टू डू कि इट इज ऑन योर फिंगर टिप कि व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान टुडे. And probably, I think we should be able to give you an answer that what is the best investment in Pakistan or in Islamabad next year on this date. So this is what we are going to inshallah deliver soon. And for that, the basic data which we are going to gather is obviously the geo data. This is business, of course, but for us, it is a social responsibility as well. Coming back to Pakistan was not about कि हमने यहाँ पे आके business करना है. It is about our contribution to our homeland, our country, and what we can do to change our society. How are we going to change is, as I said, starting point is this data, and then the application of this data different sectors के अंदर. We have not just Graana, we have Iqbal Institute of Policy Study, and then within Iqbal Institute of Policy Study, we are doing something called RE 2020, which is part of our Vision 2030, how this country is going to look like in 2030. RE 2020 is Real Estate 2020, and this has already begun. तो उसमें भी अगर आप में से कोई भी interested है, तो please be part of that. That is our social responsibility to bring the change Pakistan needs. So thank you very much everyone.